is following. Okay. Yeah. All right. Great. Boma ji, can you give your introduction, please? Ma'am, are you hear me? Yes, I can hear you. Okay, my name is Uma and I'm living in Chennai. So I already learning in Asana and Yoga Training Center. So, but not at finished CT. So this is my first class in this group. Okay. So have you attended any of the yoga class before? Yeah, Asana and Yoga Center Which yoga center? in Chennai. Asana and Yoga Center. Can you please write the name? I am not able to hear you. Okay. Asana Anditan Yoga Center. This is okay. Is it 200 hours? Uma ji? Okay. And has is it completed? From Chennai only, na? Okay. All right. I think everybody who has joined today as well, they have given their introduction. All right, let's begin the session, everyone. Sit comfortably and join your palms together to the center. Gently close your eyes. Breathe in deeply and breathe out. Once again, breathe in deeply and breathe out. Let's begin with the Om chanting, followed with the closing, with the opening prayer. Om. Sahana vavatu, sahano bhunaktu, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शान्तिः 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 Take palms together and generate heat. Gently bring your palms on your eyes and all over to your face. Give the warmth of your palms to your eyes and your face. Gently bring the palms in front of you. Open your eyes and look at your palms with a gentle smile. Very slowly open your eyes. Namaste everyone and welcome to Yoga Volunteer Program from YCB. This is the YCB's program which we are conducting from Shyambhai online classes. Okay, so already we have, it's been only one class that we had taken in the evening batch. अभी तक एक ही class हुई है, evening batch में एक class हुई है,
and second was the holiday. So now it's today's class in the evening batch. So in the very first class, again, there was the introduction which was given, the introduction regarding the yoga, what is yoga, and what is the meaning of yoga. Okay. So having discussed everything, like yoga from the perspective of a science, yoga from the perspective of that what is it is being considered, how yoga is beneficial for everyone, how yoga has the different perspective for every person, योगा के अलग अलग मीनिंग्स क्या है, योगा का पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये सब very first class that was discussed, and it is very something that you all know already. Okay. तो आज जो है, आज डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ योगा. ओके. सो जनरली हमने जो अभी तक देखा है, हमने अलग अलग वेदास एंड उपनिषद्स, रामायण, भागवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, हठ योगा प्रदीपिका, इन सब में हमने योगा का रेफरेंस देखा है और योगा के मतलब जाने हैं. ठीक है. तो हमने अभी तक हिस्ट्री ऑफ योगा में लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ like how we are taking the yoga from the different stages. तो एक आपका जो स्टेज रहता है योगा के, उसमें एक होता है प्री वैदिक पीरियड, एक है वैदिक पीरियड. सो देर आर द डिफरेंट like time during which there were the different beliefs, there were the different techniques which were taken for the yoga practices. So accordingly, there were the different philosophies about the yoga practices as well. You must have heard of, there are various kind of Vedas with us. There is the Rig Ved, Samved, Yajurved, Atharva Ved. Okay. So in all of these Vedas, there are given, the different kind of like these are having the different Vedas which is taking about the yogic teachings. It talks about the yogic teachings. So in yogic teachings, it was all that at that time there were rishis who used to, the rishis or the ancient sages who used to give, who used to have that ability to see their own spiritual practices at that time. And when you have that yogic living at that time, that they were used to have that yogic living. Now the upanishads are also having all of these, a sense of Vedas. Upanishads used to describe the vision of reality. Okay, so having seen that what is the way to lead a life, having a self inquiry, having a reality, the inner reality of it. So Vedas had to have all the philosophies and all the knowledge, all the things that Vedas used to contain, but Upanishads used to contain the knowledge portion of the Vedas. So Vedas is a very, you can say it is a a wide thing, and similarly, the Upanishads is something which is contained as the knowledge portion of the Vedas. Similarly, in all of it, all the kind of the yogic lifestyle one has to follow, that is taken as the teachings of the yogic teachings, which is a spiritual practice which one follows. Okay. Having seen that, you will find that even in all of these there were three subjects which we used to see. Three subjects, as in the Jiva, the Jagat, and the Ishwara. Okay. The Jiva, who is the soul, like the embodied soul, Jagat as the world, and the Ishwara as the God or the creator of the universe. So these are the three, and where the yoga again comes, like yoga is meaning, yoga's meaning is yuj, to unite Atmana with Paramatmana. And also there is the creator of the universe, that is the Paramatmana, and it is the Atmana, which is the Jiva. The Jiva has the Atmana, and then having seen all of the three things, now yoga has equally seen that how the this prakriti works, how the jiva or the atmana works, and how
It is the how you will see there is the Atmana and the Paramatmana. Okay, the Atmana and the Paramatmana. Just a minute. Okay, so having all of these, there are the classical yoga period. So you'll find in the classical yoga there is a pre-classical era. The pre-classical era having the different belief, the different. I'll just do one thing. I'll share if it's possible. I'll share my screen. Um, okay, it's not happening. So, in the classical yoga, what is the different beliefs and techniques which happens as per the classical period, which is defined by Patanjali Yoga Sutra? So, Patanjali Yoga Sutra, which gives all the eight limbs of path, eight paths, eight limbs of yoga. That is the path of Ashtanga Yoga, which is given by Maharishi Patanjali. So, in Maharishi Patanjali, who has given that classical yoga? What is the classical yoga? It has described those eight limbs of the path, eight limbs, which is having all that divided into the yamas, niyamas, asanas, pranayams, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Okay, so having the yamas are seen in the different way. That what you mean by yama? Yama is something having the social constraints or having some observance. What is the thing which should be done, and what are the things which should not be done? So yama is something like, even it is like the do's and don'ts. It is like that what that makes you more disciplined. Okay, that makes you and leads you towards the disciplined and the better way. Niyama is something again. Niyama is also taking you towards the discipline, but it is having the personal observance, having that personal observance or the restraint of what should be done and again what should not be done. So yama and niyamas all is altogether seen as what is do's and what is don'ts. Having seen all of those discipline, जब आप okay, I will also explain it in Hindi. अभी तक योगा के बारे में हमने ये देखा है कि हमारा जो हिस्ट्री ऑफ योगा है वो एक क्लासिकल पीरियड और एक मतलब एक वैदिक नॉलेज से ही लिया गया है। जितने भी हमारे योगा के प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं वेदास और उपनिषद से लिए गए हैं। तो उपनिषद एक ऐसा वेदास का पोर्शन है जिसमें एक योगिक फिलॉसफी भी होती है और योगा उसमें डिफाइन किया जाता है। अगर हम योगा के थ्रू देखें तो योगा के तीन सब्जेक्ट देखे जाते हैं, जीवा, ईश्वरा एंड द जगत। ओके, सो हमारा जो हमें हमें जो योगा के उसमें देखना है तो योगा का मतलब है कि आत्मना और परमात्मना का वननेस, राइट? दैट इज सीन एज द योगा। Now, when we are looking forward to the history, so this has the source of Vedas and of course the Upanishads, and also we are able to also see that the Ashtanga Yoga has been seen from the classical. This is the classical during the pre-classical era. So during the time when the rishis and munis used to practice all that wisdom, practice all that their own way of having that spiritual practice. So at that time there were the beliefs and there were the techniques which were taken in that period and were codified by the Patanjali, Maharishi Patanjali. So that is something that is more that is taken in the very who are next to understand all of those yogic knowledge, right? So for that understanding of that yogic knowledge, all those beliefs and techniques and the things
which were, maybe there were certain conflicting belief systems, there would be something contradictory things as well. So these were all codified. ये सभी को बना के महर्षि पतंजलि ने जो है एक क्लासिकल पीरियड में पतंजलि योग सूत्र में एक सिस्टमैटिक वे में एक योगा का एक completely systematic presentation दिया है, which is given by Patanjali Yoga, which is given in Patanjali Yoga Sutra. So that is describing the Ashtanga Yoga or the 8 limbs of Ashtanga Yoga, which is given by Maharishi Patanjali in Patanjali Yoga Sutra. So having seen, it talks about what is the self knowledge, what is the action, what is the wisdom, what are the yogic practices, what is meditation, and this will be found in Buddhism as well. So Buddhism is also about the becoming, centering yourself and focusing on yourself, having the self knowledge, having the self enlightenment. So if you have self knowledge, it will be the self enlightenment as well, right? So anyway, we are able to see some good good kind of text that we are able to see and from the other people's life as well. Similarly, there is a very famous sayings by in the famous sayings by Swami Vivekananda also in his books as well. You'll find some of the teachings of Lord Buddha as well. You'll find, yes, somebody was saying something. Okay, I'll continue then. So there were various teachings which were seen, and Patanjali Maharishi Patanjali has seen and organized various practices of yoga. And when they have seen that how they can present the yoga practices and make it very easier for us to understand, there are the 8 limbed part containing all the steps towards attaining the enlightenment or the samadhi. What sort of enlightenment could be? The person can have a spiritual enlightenment, the person can have their own way of finding the bliss, they can have their own way of finding the happiness within themselves and finding that inner awareness which is enlightening. So those 8 limbs path can be the yamas, having the yamas, niyamas, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan, and samadhi. This becomes the 8 limbs. So whenever we are starting with the asanas, whenever we come to the yoga practices, जब भी हम एक योगा प्रैक्टिस में हम जब भी योगा को अपना लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, आई विल नॉट से इट एज अ लाइफस्टाइल, योगा एक आपका माध्यम बन जाता है कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, राइट? तो इसमें सबसे पहले आप जब आसनास की तरफ भी बढ़ेंगे तो यू हैव दैट विलिंगनेस, आपके लिए एक विलिंगनेस या एक डिटर्मिनेशन होता है कि जिसमें आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, यू आर गोइंग टू चेंज योर हैबिट्स, यू आर गोइंग टू चेंज योर ओन अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड नोइंग बेटर, आप अपने आप को बेहतर, अपनी नॉलेज को, अपने आप को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे आप सबसे पहले ये खुद के लिए देखते हैं कि आपकी खुद की जर्नी जो है, अगेन I most of the time use this word as journey, but this is a path. This is the proper 8 limbs path as well. If I talk in the Ashtanga for the Ashtanga Yoga, so whenever you start with your yogic practices, you always start to have your own way that what you are going to believe that you are going to start with. Having started with all the like non-disturbance, like you are going to have your own time of practicing yoga, you have your own time to have known yourself that what is the thing, what are the things that can help you and can help your way that your mind is not constantly engaged in different thoughts. So that is the way that how you start. First of all, you have certain do's and don'ts that you give to yourself. और खुद में एक यमास एंड नियमास में यही है कि आपके लिए ये, आप जब भी एक योगा प्रैक्टिस करें
कभी भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप अपने योगा प्रैक्टिस में एक ही प्रॉपरली एक चूज कर सकते हैं वेयर यू कैन प्रैक्टिस वन पर्टिकुलर प्लेस, एंड देन यू कैन सिट ओवर देयर एंड देन यू कैन प्रैक्टिस. सो again, having seen what are the things, what is the observance. So every time if your phone is ringing, or if somebody is there, if something is there whenever you're practicing, so you can have your own particular giving your valuable time for your yoga practices. That can be your yama. Similarly, एक नियमा ऐसे ही है कि आप कभी भी योगा प्रैक्टिस शुरू करें तो आप एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आपने अगर अपनी योगा प्रैक्टिस को और बढ़ाना है तो आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपने लिए अपने लाइफस्टाइल में अच्छा कर सकते हैं, अपना सेल्फ प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं. वो एक आप नियम बना सकते हैं कि हमारा एक जो दैट आपने एक निर्धारित टाइम जो है वो अपने लिए रख लिया है कि हमने इस टाइम पे अपनी योगा प्रैक्टिस को देना है, and you will observe that what are the kind of the transformations that you are giving. तो अलग अलग practices में there is the अलग अलग नियम that people follow. Similarly, having the asanas, any type of the physical postures which is being given, any type of the asana practice which is being done on the mat, that is important. वो आसना प्रैक्टिस में आपका आता है जब कोई भी आसनास दिए जाते हैं आपको, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी इंक्रीज हो, राइट. Pranayams is for, again, as you everybody know, that is the regulation of your breath. Having awareness towards the breath and the asana and the movement, and with which in which form you are moving, that is also very important. When you are regulating your own pace, when you are having your own pace of your movement, having your own pace of your own breath work which is happening, then the pratyahara is also another limb of yoga which talks that pratyahara is sense withdrawal in the preparation for meditation. जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं तो आपके लिए एक सेंस विड्रॉल बहुत जरूरी होता है कि आप अपने सभी यू आर जस्ट preparing yourself, that you are not being attached to anything, you are being not disturbed, and you are not having any kind of your senses, like you are hearing, if you're hearing something, let it go and let it pass by. Or if you're seeing something, of course, if you have eyes closed, then probably there are many thoughts which will be there in your, at your mind planes. So आपके जितने भी sense, like your senses are engaged, your senses are completely outside, so by any ways, so that is the control that is required. So again, वो कंट्रोलिंग भी नहीं होता, वो अपने आप ही जितनी भी सेंसेस होती हैं, दैट इज प्रिपेयरिंग, दैट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर मेडिटेशन प्रैक्टिस. वो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं, तो उसमें आपका प्रत्याहारा आप में आने लगता है, राइट. प्रत्याहारा बहुत जरूरी है आपके मेडिटेशन के लिए. अगर प्रत्याहारा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं वो इनर थॉट्स रहेंगे और वो मेडिटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा. सिमिलरली इज द ध्यान, धारणा. धारणा becomes the concentration. Okay, just a minute please. Okay, so dharana is the concentration where even you have that dharana,
uh, now willingness and determination is different, but dharana, when you are concentrating on one particular thing, on one particular object, on one particular action, on one particular practice, if you're moving with that dharana, that you are going to have the asana proper, right? If you are going to have that movement within that the flow of the prana with proper asana movement, so that is also a dharana. If you are also concentrating that you will be again at least your own self practice will be increased and will be enhanced, so that at least for an year you will be doing the yoga practice continuously, that becomes your dharma. So again you are being concentrated on your own practice throughout, that becomes your dharna. ध्यान, anybody, क्या मैं हिंदी में भी बोलूं? Should I repeat it in Hindi? Yes, ma'am. मैडम आप हिंदी यूज करो, लैंग्वेज यहाँ पे सब इंडियन है, सबको हिंदी मालूम है मैम। Yes, ma'am. मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कीजिए। Yeah, mix of Hindi and English, ठीक है, please. ठीक है, ओके। मतलब तो प्योर हिंदी भी नहीं इतना। ओके, तो हमने जो 8 लिम्स ऑफ योगा देखे हैं, जिसमें यमा, नियमा, आसना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, जिसमें यमा में ही हमारे कुछ डूज डोंट्स हैं, हमारी कुछ वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज हैं, या कुछ ऑब्जर्वेंस है कि हम अपने आप को किस तरीके से ऑब्जर्व करें, हमें कौन सा पाथ, हम कौन से पाथ पे हम कौन सा पाथ में जा रहे हैं योगिक लाइफस्टाइल में, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, या फिर हमें लाइक अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए ज्यादा देर तक। सो दीज बिकम्स योर यमास, यू आर रिस्ट्रेनिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को कहीं जगह में एक लिमिटेशंस दे रहे हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने कुछ वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपका यमा होगा। सिमिलरली जो नियमास रहेंगे, नियमास में भी becomes the personal observance of having the restraints of the study, आपका नियमा रहता है कि आप अपने आप को एक नियम में, एक डिसिप्लिन में अपने आप को रखते हैं। नाउ आपके डिसिप्लिन में जो आप अपनी हैबिट्स भी रखेंगे, वो आपका एक अपने आप में डिसिप्लिन बन जाएगा, वो आपका नियम बन जाएगा, कि आपका एक नियम है कि आपने रोज 1 घंटा सेल्फ योगा प्रैक्टिस आप करते हैं, या आप अपने लिए एक स्वाध्याय, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, योगा के बारे में पढ़ते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, लाइक आप योगा के लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आप YTTC भी अगर लेते हैं तो आप साथ में और भी कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आपका एक नियम बन जाता है, ठीक है। सो इन दैट वे योर नियम्स कुड बी एनीथिंग, आपकी हैबिट से लेकर आपकी रीडिंग। हाँ, Sorry, English लियो, English also, please. मैंने अभी इंग्लिश में भी तो आई हैड एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश एज वेल। Little bit, now change, no, that's way. It's the same. ओके, so again the asanas, with I have explained to you the yamas and the niyamas. Next we have the asanas. The asanas are about all the physical postures on the mat, right? The asanas which are being performed on the mat, which are taken on the mat, so that you can gain the strength, right? So asanas क्या रहते हैं?
Okay. Asanas are the way of practicing your yoga sequences, having the yoga sequences on the mat. Okay. तो asanas आपके जितने भी आसन रहते हैं, तो आपके वो asanas जो होते हैं आपके strengthening के लिए अच्छे होते हैं, जिससे कि आप अपने अपने आप को एक strength दे सकें, right? तो asanas having the different way, sitting, standing, supine and prone. These asanas are taken in 4 different ways. Okay. So all of these asanas are required for their own relaxation. Relaxation hai, strengthening hai. All are the requirements, all are the things which are taken for these asanas. These are the benefits of the asanas. Similarly, next we have the pranayama. प्राणायाम जितने आप आसनास अपने हाउ द आसनास आर बीइंग टेकन, आप जितने भी आसनास मैट पे आप आसनास जितने भी लगाते हैं, तो साथ में उसके बाद में आसनास कंप्लीट होने के बाद आप अपना प्राणायाम फॉलो करते हैं। तो प्राणायाम से क्या है, आपका एक लाइफ फोर्स है, आपका ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रेथ कंट्रोल है, ब्रेथ रेगुलेशन है, जिससे आप अपनी ब्रेथ अवेयरनेस पे आते हैं। Breath awareness, the more you are not concentrating but practicing your breath, you're including and you're enhancing more of your lung capacity. The more you enhance your lung capacity, the more your lungs will be taking the oxygen. So again, having that more capacity to increase your intake of the oxygen, and the breath working takes more in a more better way. So pranayama is very, very important. We do not say that you have to take the breath control. वो एक holding of the breath happens for some time, for a certain time. But yet again, you'll see that that breath control and the breath regulation is important so that you understand how your breath work is going. And that is important. Okay. So breath work, whenever you do anything, so something happens to your throat. Whenever you are doing any of the breath work, something happens to your throat. Then something happens to your nose, at your nose, when you are able to take the breath. Some kind of the thing that you are able to understand that it has come to your nose and you are able to breathe in a such a way that it gives a kind of a cooling kind of an effect. Similarly, when you breathe for a longer time and you are able to concentrate, you will be feeling some kind of the cooling effect that you will be finding it here, right? So at every breath that you take and you increase your way of having the breath, having the intake of the breath, having the proper way of taking your breath, regulating your breath, it will help you further to have a good way of concentration. So कभी भी ऐसा कुछ होता है, कभी नहीं समझ आता है या कुछ होता है, you take the breath and again start to begin with the different techniques of your own way to control and regulate your breath and able to concentrate on your own, preparing your own self to concentrate on one thing. Okay. Pratyahara is equally important. After when you see the pranayams, pratyahara अपने आप जैसे जैसे आप अपने आप को breathing practice में लेके आते हैं, वैसे वैसे आपका sense withdrawal होने लगता है। आप अपने आप को withdraw कर लेते हैं from all the sensory things, from whichever way, because there is a life force on which you will be able to concentrate. एक ऐसी life force जो होती है, जो breath होती है, जब आप उसमें कंसंट्रेट करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्या होता है, आपका जो एक एक प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन की, वो बढ़ने लगती है। देन वी हैव द धारणा। धारणा क्या है, एक कंसंट्रेशन है, आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है जहां पे आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं, wherever you will be able to concentrate yourself, so that becomes your dharana. If you are concentrating that to have something better, to have to have a habit to practice yoga, that also becomes the dharana. If you also believe that you will be studying your you'll be studying and having the knowledge of the yoga, that is also your dharana.
if you think that you'll be able to have that pranayama practice throughout, having the pranayama practice at least for some time in a day, that also becomes your dharana. Next is the dhyana. Dhyana is the meditation. Meditation comes whenever you are able to have your state of thoughtlessness. That state of thoughtlessness leads you to meditation. Okay, that state of thoughtlessness comes whenever after the concentration, जब भी आप concentrate करते हैं या धारणा एक अपने लिए आप कंसिस्टेंसी जब आपकी होती है तो आपके लिए जरूर इतना इफेक्ट नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा यू नो जरूरत पड़ती है कि it's taking too long to come for the practice or to do anything which is required. So at that time your dharana or your concentration comes in such a way that you will be able to lead yourself towards meditation. आपका concentration अच्छा हो जाता है, आप अपने आप को एक practice में इस तरीके से इनकलकेट कर लेते हैं जिससे कि आपका ध्यान जो है या आपका जो मेडिटेशन है वो आने लगता है, वो होने लगता है. समाधि जो है that is very next level where there is the spiritual absorption. You're able to absorb yourself spiritually. Absorption in the sense, now there is already the sense withdrawal has taken place. Sense withdrawal ho chuka hota hai, like when you have to sit, it is not like that throughout the time there is the samadhi, but samadhi is the state where you will be having that coming to a state of thoughtlessness. And at that time when you have that state of thoughtlessness, you have more of the absorption, the spiritual absorption that takes place. जब आप में स्पिरिचुअल अब्जॉर्प्शन होने लगता है तो आपका एक वो योगिक लाइफस्टाइल, वो योगिक पाथ वो कंटिन्यूड रहता है. एंड थ्रू आउट आपका द वे ऑफ हैविंग द प्रैक्टिस, there are the various important things, like the practice is important, that is the abhyasa and vairagya. So vairagya is also a very important quality as a yogic practitioner. जब आप में वैराग्य उस टाइम के लिए होता है जब आप so sorry, वैराग्य आपका तब जरूरी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं मैट पर. तो यू लीव एवरीथिंग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग एट दैट टाइम एज वेल. सो वो भी आपका एक वैराग्य है, राइट? Vairagya and Abhyasa are the two important things that is good for a practitioner. Okay? तो ये आपका क्लासिकल, ड्यूरिंग द क्लासिकल एजेस, ये आपके योगा के बारे में. Now the post classical yoga, what happens in the post classical yoga, there is more harmony. You are concentrating on your teachings. The teachings is in such a way that it is focusing on the present. So post classical, that was at that time there was a pre classical period when Maharishi Patanjali had given all these 8 limbs of yoga and their own teachings of the spiritual practice. ठीक है, Maharishi Patanjali ने अपने classical, during the pre classical era अपना spiritual practice के बारे में बताया, 8 limbs of yoga के बारे में बताया, हमारे योगा फिलोसफी के बारे में बताया, एक सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन दिया कि जो योगा प्रैक्टिस होती है वो किस तरीके से कौन से कितने स्टेप्स पे जाती है, जिससे कि हम अल्टीमेटली स्पिरिचुअल रेल्म में अपने आप को अब्सॉर्ब कर सकें, हम अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज्यादा इम्प्रूव कर सकें. हैविंग द पोस्ट क्लासिकल एरा में, इफ द पोस्ट क्लासिकल पीरियड आप देखेंगे तो उसमें दैट इज इट इज focusing on more on the present and more on the harmony. So having that yoga practice, it is talking about having the harmony, having the rejuvenation of the body and to have a prolonged life. Harmony means that only that you are able to have the peaceful in everything. The peace should be there in the body as well. The peace should be there in your every matter. The matter, the concept, the enlightenment, your awareness towards your mind
your enlightenment, that physical existence, your own physical existence, having all that breakage of the mind that might be there about your own physical existence. So to cleanse all that, सभी तरीके से आपके माइंड में भी जो अपने लिए एक फिजिकल एग्जिस्टेंस को लेके आपके कुछ भी देर आर सर्टन थिंग्स विच बाइंड्स अस, कुछ ना कुछ ऐसी अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को लेकर हमारे कुछ सवाल होते हैं, या कुछ ऐसे वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ आवर ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो वो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए वी आर हैविंग द क्लेंजिंग ऑफ आवर माइंड। तो हमारा जो वो माइंड क्लेंजिंग होती है वो कैसे होती है? थ्रू द कंसेप्ट ऑफ दैट एनलाइटनमेंट। हमारा एनलाइटनमेंट कैसे होता है, राइट? हैविंग दैट एनलाइटनमेंट वी आर एबल टू हैव द कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल, द हायर बीइंग, राइट? हमारा हायर बीइंग से जब वो एक एक्सप्लोरेशन रहता है, एक्सप्लोर हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग, एंड व्हेन वी आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग, तो क्या है, हमारा सिर्फ योगा मैट पे प्रैक्टिस करना नहीं होता, हमारा स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को अब्जॉर्ब कर सकें, हम समझ सकें, और हमारा जो एक सेंटरिंग है या जो फोकस है, हम अपने आप को प्रेजेंट में ला सके। तो always we are having the mind which is thinking about our physical existence. That is important to know it, that what is our spiritual connection, what is the mind body connection, what is the creation that is there for us. And that is with the help of the Hatha Yoga that we are able to find the harmony between the mind and the body, right? So every different teachings, the Ashtanga Yoga has the different teachings, the Hatha Yoga has the different teachings. The Hatha Yoga says about the other aim that yoga has, the Ashtanga Yoga talks about the other aims that the yoga has. तो अष्टांग योगा में जैसे अभी तक मैंने आपको ये बताया है अष्टांग योगा का और हठ योगा का. सो अष्टांग योगा हैज गिवन द 8 limbs path. Through that 8 limbs path, it reaches to the samadhi, that is the enlightenment, which is called as the samadhi in the Ashtanga Yoga. And once one reaches one or the other things, one or the other layers, so after that they attain that samadhi, and that is the main aim of the yoga as per the Ashtanga Yoga. Similarly, the Hatha Yoga has its own aim, and that philosophy talks about having the rejuvenated mind, having the clearing of the mind, so that all the mind breakage, there is to have a prolonged life. Every mind which is having any kind of thing which requires to have the breakage of those knots, that should be broken, and you are able to find your physical existence. You are having your own awareness towards yourself, and having the enlightenment towards your physical existence. तो वहां से दोनों का, अष्टांग योगा भी हो या हठ योगा भी हो, मेन एम क्या है? एनलाइटनमेंट. अब एनलाइटनमेंट का एक अष्टांग योगा में एक अलग तरीका दिया हुआ है, हैविंग द 8 limbs, और हठ योगा में अगेन देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर द डिफरेंट टीचिंग्स अबाउट इट, राइट? सो हमने जैसे 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 हम मॉडर्न एरा में आए, ठीक है, योगा और इवॉल्व होता गया. देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ योगा दैट हैपेंड after that Hatha Yoga, after that Ashtanga Yoga and Hatha Yoga. Okay, so there were there were many principles, many things which there were people who used to talk about yoga. Swami Vivekananda has given their own lectures about having that own their own knowledge, their own enlightenment, their own knowledge towards the yoga as well. So that is all that had influenced people in the modern era from what has been spoken by uh, the people who are inspiring, the people who are giving the knowledge of the yoga. Subsequently, there are certain inspiration, the strong inspiration which is given by several legends in India as well. So you must have heard of Pitabi Joyce, okay, Shri K. Pitabi Joyce. You must have heard of Dr. Nagendra ji. You must have heard of Swami Satyananda ji.
You must have heard of Sri Ravi Shankar ji. You must have heard of Swami Ramdev ji. You may have heard of Swami Sivananda ji, BKS Iyengar ji. So BKS Iyengar, we have so many books which is written by BKS Iyengar, and all of these are the people who are the legends and who have given so many efforts, who have given so many inspiration in the yoga. So all of these are, we are getting all the teachings from them, we are getting all of the things, we are following all of the principles from them. So as a yoga practitioner, they have given us the basic uh, things which influences us, which makes us know that what is the meaning of yoga, and they have actually taken that yoga to a level where everybody can understand what is yoga all about, right? तो सभी के लिए जो है, इतने जितने भी लोगों ने योगा पर जितनी भी रिसर्च की है, जितना भी प्रैक्टिस किया है, जितना भी समझा है योगा को, वो हम लोगों के लिए एक इजी वे में समझने के लिए दिया है कि जो योगा के बारे में अलग अलग सोर्सेज हैं, वो हमारे पास हमें दिए हैं, जिससे कि हम उनको देख सकें, हम पढ़ सकें, हम जान सकें और अपनी प्रैक्टिस को भी आगे ले सकें. तो डेफिनेटली वी कैन नॉट गो अप टू दैट लेवल जितने पहले लोगों ने इतना अपना लेवल को अचीव किया है. हम ऐसे मॉडर्न एरा में हैं जहाँ पे हम अपने आप को एक लाइक एक हेल्दी तरीके से रह पाए, हम अपने आप को हेल्दी तरीके से रख पाए, हम अपनी अवेयरनेस को अच्छा रख पाए, हम अपनी कैपेबिलिटीज को इतना अच्छा रख पाए. तो योगा हमारे लिए, आई थिंक, for us in the present day, it is good to be at present, it is good to have a good focus, it is good to have a good concentration, it is good to have a good yogic lifestyle. And also, if one is able to achieve having their own enlightenment, जब अगर किसी भी पर्सन ने जो अगर योगा प्रैक्टिस किया है, तो अगर वो अपने आप को enlightenment कर सकता है और अपने आप को spiritual realm में spiritual connection अच्छा रख सकता है, as an Atmana and Paramatmana, having following the Yamas and Niyamas, having been consistent, having followed various things to attain that. So that is something a very rigorous, you can say, I will not say rigorous, it is a tapaha that is being required to attain that enlightenment. ठीक है? तो अगर आप उस तपाहा को फॉलो, आप वो तपाहा करने के लिए, you are completely becoming a practitioner when you are able to do that tapaha, having that guiding principles to be followed by yoga practitioner. There are various things which are followed by the yoga practitioner. तो जिस तरीके से आप कुछ नियम्स देखते हैं, तो एज अ योगा प्रैक्टिशनर बहुत सारे ऐसे नियम्स होते हैं जो फॉलो करने जरूरी होते हैं, जैसे कि there is the cleanliness, the purity or the shocha. Having practice when you are doing the yogic practice, it is all about that you take your own practice in a very calm and quiet atmosphere, having your own way, having your own way of knowing yourself, having your own way of taking your practice, as in your awareness towards yourself, your awareness towards your mind and your body, and in that calm and quiet atmosphere, you will be able to have that achieve that relaxation. Now this day, how much you have transformed, how much change you have got. Okay, so that is coming from the shocha. So if you're having that purity in your yoga practice, purity in the yoga practice as well, so having the cleanliness surrounding, having the clean body, having the clean mind, so that purity should be there, so that you're able to have that yoga practices. Yoga practices should also be done in your empty stomach. You must have everybody understood and must have listened to this every time कि हमेशा जो योगा practices होता है वो empty stomach ही होना चाहिए. ठीक है, light stomach हो, empty stomach हो, और वो ज्यादा better है, so that any of the yoga practices is not having any effect, that your practice should not go wasted, it should not be wasted.
तो आपकी जितनी भी योगा प्रैक्टिसेस है वो हमेशा लाइट और एम्प्टी स्टमक ही होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी योगा प्रैक्टिस से बेनिफिट्स ज्यादा ले सकें. So again, your bladder should be also emptied, and before starting of the yoga practices, that is also important. Similarly, any sort of surface where you are placing your yoga mat should not be in such a way which is unclean, which is uneven surface, which is like a place where already there is something, some or the other objects are already there, so there you cannot place a yoga mat. For example, if there is a blanket, if there is a mattress, if there is a dari, so you cannot place your yoga mat over there. The yoga mat should be placed in a very proper way, and you can place that yoga mat on on a very even surface and not on any other object. So you can place it on an even surface like a floor. So on a floor you can place the yoga mat and not on any other object. So then you can do your practice, and making sure also that the cleanliness is there surrounding you. The yoga mat is your completely clean. So that is also very important. And whatever, whenever you're practicing as a practitioner, you're wearing a very light and cotton clothes so that you're able to facilitate a good movement having wearing the comfortable clothing. Okay, so whenever you are able to have that your own wearing your own light clothes, it is easy for you also to have that practice, which is more better way, is also be able to that you're not finding any disturbance within yourself, you're not having any sort of thing that coming to your mind about your own uh, when you are on the mat. So that should be also taken care of regarding the things when you are starting your practice on the mat. Okay, anytime if you are feeling the illness, anytime you're feeling exhausted, and every time you're feeling that you are not able to practice the yoga, at that time you can just have some you can have some changes in your yoga practice. Whenever it is the state of illness, whenever you're not feeling well, that practice can be altered, that practice can be changed. तो आप जब भी देखें कि अगर आपसे योगा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो it is not like that this is something that it is breaking your consistency, या आपका consistency break नहीं करेगा, but yet you are giving your own time for your body to rest, you're giving your own time to finding, so that you will be able to rejuvenate again. Resting में भी rejuvenation होता है. तो योगा प्रैक्टिस करते समय अगर आप रिजुविनेट कर रहे हैं, आप अपने मूवमेंट से अपने आप के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, रेस्टिंग में भी अपने आप को आप रिजुविनेट कर रहे हैं जब आप इलनेस महसूस करते हैं. तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि इलनेस के दौरान पे आपको योगा प्रैक्टिस करनी है. Having that rejuvenation by resting is also very important, and then starting again with the practice can also start in your yoga. That can also help you in your yoga way, that you are continuing it, right? So practice session should always start with the prayer, and so that you will be having a relaxed mind. हमेशा अपना practice को एक prayer से start करें. That is important, so that you will be able to concentrate and start your practice with a very conducive environment. आपका जो environment है, वो surrounding है, वो हमेशा calm और peaceful रहेगी, और आपकी practice हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देगी every day whenever you are practicing, right? So this is again explained like in English and in Hindi as well. So this is I think आप में से सभी को इसके बारे में जितना भी आज मैंने बताया है, कुछ आप लोगों ने अगर जैसे पढ़ा होगा, कुछ पता भी होगा. तो एनीथिंग आपको कुछ लगता है कि आप ऐड करना चाहते हैं, या आप कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर प्लीज. मैम, हम्म. ये पीडीएफ मिल सकती है हमें? विच पीडीएफ? जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये पूरा सब, हम्म. ये
एक्चुअली क्या है, was it visible to you जब आप I was share I think स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं हुई, तो आपको पीडीएफ दिख रहा था क्या when I was? नहीं 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 तो आपको पीडीएफ का कौन सा दिखा, which पीडीएफ you wanted? नहीं, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये जो बुक्स है या क्या है, ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये चाहिए था। तो what I'll do, actually I am preparing to write the things. So ये अपने आप से जैसे है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। तो आई विल डू वन थिंग, अगर आपका इसको ये मटेरियल चाहिए रहेगा तो गिव मी सम टाइम सो दैट आई बी एबल टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ, किसी का और क्वेश्चन है कोई? आपने में वो बताया ना पहले में वो कि वो क्या बताया वो 7 नियम जो बताए ना आपने, एक बार रिपीट करो। 8 लिम्ब पाथ, हाँ अष्टांग हाँ, योगा के 8 लिम्ब पाथ। हम्म वो ध्यान धारणा समाधि वाले कुछ बताए ना आपने। हम्म। तो पहले क्या था, यम नियम आसन यम ध्यान धारणा बोलो। समाधि, क्या यम कहिए, मैं आप बोलिए दोबारा मैम। मैं रिपीट करूं या जो 8 लिम्स पाथ हैं? यस हाँ, मैं रिपीट करूं? यस, करो करो, रिपीट करो। हाँ, तो यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ओके, अभी जो प्रत्याहार आपने जो बोला, तो प्रत्याहार में मेन क्या क्या करने का इसमें, कौन प्रत्याहार। सा प्रत्याहार करने का? कौन सा प्रत्याहार? हम्म प्रत्याहार देखिए, प्रत्याहार मीन्स इज नॉन अटैचमेंट। ठीक है? हम्म अब वो नॉन अटैचमेंट क्या होगा, जब आप अगर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप आपके थॉट्स, आप अपने थॉट से अटैच्ड हैं उस टाइम पे, अब आप अपनी प्रैक्टिस पे अटैच्ड नहीं है, तो आपका प्रत्याहार क्या होना चाहिए कि आपने उस दौरान में जब आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आसन लगा रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए प्रत्याहार होना चाहिए जिससे कि आप नॉन अटैच्ड रहें, नॉन अटैच्ड टू एनीथिंग, right? And being ओके, there at the present whenever you are doing, whenever you are practicing, आप आसना लगा रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका जो है सभी तरीके से आपका प्रैक्टिस में ध्यान रहे। तो नॉन, और ये जो आहार आहार का होता है, तो अगर कोई योगा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? अगर कोई योगा प्रैक्टिस कर रहा है, हेल्दी हेल्दी हम्म आहार होना चाहिए, कभी भी कोई हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? हम्म ना हो सके सात्विक आहार हो, हम्म राइट? और एक कितना आसन कितना समय तक करना चाहिए, प्राणायाम कितने समय तक करना चाहिए? एज अ सेल्फ प्रैक्टिस अगर आप देखें तो फॉर एन आवर, अगर आप आसना आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अबाउट 5 to 10 minutes, एंड इफ यू टेक इट लाइक 25 minutes, आप अपना प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे हमारे को एक गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो उन गाइडलाइंस में भी दिया गया है कि आपको आसना कितनी देर तक करना है, उसमें आपके जो जॉइंट मूवमेंट्स या मोबिलिटी है या लूजनिंग प्रैक्टिसेस है वो कितनी देर के लिए है, आपका ब्रेथ वर्क, आपका वार्म अप, आपका आसना ये कितनी देर के लिए है, वो प्रॉपरली गाइडलाइंस भी दी हुई है। इफ यू वांट आई नहीं विल। नहीं, आसना तो आसन करने में तो 1 घंटा भी कर सकते हैं, अगर कोई इंसान का स्टेमिना अच्छा है तो 2 घंटा भी कर सकता है। Kashmira has raised her hand. Yes, Kashmira, please. Yeah, ma'am, I was asking that since this course that we're doing is Hmm. mainly for so that we can be a volunteer as a yoga, like we can teach yoga as a volunteer. So, Hmm. what I wanted to ask is there any way that we should keep in mind while, for example, like how you are teaching us?
So, as a instructor, what are the things that we should keep in mind? Or if I'm asking this question too early, then Your but voice that is is my question. your What your things that your voice is breaking. okay? Is it better now? हाँ Hello? it's fine now. हाँ. Okay, so what I was asking is that as an instructor, what things should we keep in mind while we are teaching yoga or in like making them understand as you are telling us? Because right now we are still in the theory part. Once we get into the asanas part, like जब हम प्राणायाम सिखा रहे होंगे या फिर आसना सिखा रहे होंगे, because जो लोग yoga सीखने आते हैं, they are not all of the same age group. So is there anything that tips that you can give so that we can keep in mind while teaching others? Okay, so as a practitioner, अगर आप जैसे आपके पास लोग आते हैं जिनको आप योगा करवाते हैं of different ages, if particularly like that, तो आपके लिए जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है अभी तक, लाइक हाउ यू शुड हैव योर सराउंडिंग्स, कि आपने अपनी प्रैक्टिस को पहले कैसे अच्छा करना है। जब आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए आपके यम नियम अच्छे होंगे, आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा, तो सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है। जब आप अपनी क्वालिटीज को पहले अच्छा रखेंगे तभी आप किसी और को ठीक रखेंगे। सो आपके पास इतने ऐसे लोग भी आएंगे जो जिनके पास लाइक आप उनको कितने भी सॉल्यूशंस दे दें, उनके पास हमेशा प्रॉब्लम होगी। या ऐसा भी होगा कि आप उनको किस तरीके से डील करेंगे, तो अगेन उनके लिए जो आप सीक्वेंस डिजाइन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है कि आप उनके लिए उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सीक्वेंस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, right? That is important. Now, how to design that sequence, how to have that, for that it is the role of a yoga instructor कि आपके instructions कैसे होने चाहिए, so that every time if one person has told you one problem and subsequently they can say that आपने तो मुझे आसन ऐसे करवाया कि मेरे पेन होने लग गया, they can even say that. So आपके इंस्ट्रक्शंस ऐसे होने चाहिए कि कभी भी कोई क्लाइंट आपको ऐसे ना कह सके कि you have not given, you are not given a good practice, you are not giving a good yoga class. सो इन दैट वे आपके इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही होने चाहिए कि आप हमेशा ये बता सकें कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपके लिए डूज एंड डोंट्स हैं तो योगा क्लास में, टू हैव योर योगा क्लास वेल प्रिपेयर्ड, देयर शुड बी सर्टेन वे वेयर योर इंस्ट्रक्शंस शुड बी वेरी क्लियर एंड मेकिंग एंड कीपिंग दैट इन माइंड दैट योर इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग फॉलोड। सो डिसिप्लिन सिर्फ आपके लिए नहीं है, डिसिप्लिन आपकी क्लास के लिए भी होगा, right? So in every way it's a two-way thing. Okay? Thank you. Thank you. मैडम मेरा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है। मैंने आपसे Thank वो पूछा था कि जो आसन का होता है, ठीक है, तो हम्म। आसन कितने घंटे तक इंसान कर सकता है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपको। आप कितनी देर तक कर सकते हैं नीलेश जी? मैं तो 1 घंटा भी करता हूँ, 1.5 घंटा भी करता हूँ, अलग अलग आसन होते हैं उसमें। समझो कि मैं अगर 15 प्रकार के कोई आसन करता हूँ तो किसी आसन को मैं 3 बार रिपीट करता हूँ, किसी को 5 बार रिपीट करता हूँ, तो 1.5 घंटा भी करता हूँ मैं। तो कर सकते हैं ना ऐसे 1.5 घंटा? सी अगर आप ये सोचें कि आप मतलब ज्यादा देर के लिए अगर आसन करेंगे तो उससे स्ट्रेंथ होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर 1.5 हाँ जी। यस मैम, बोलिए। आई थिंक बूमा जी हैड अ क्वेश्चन। मैडम मेरा आंसर फिनिश करके फिर बाद में और लीजिए ना। हाँ, सो नीलेश जी अगर आप ये सोचते हैं कि आप कंटिन्यूअसली फॉर 1.5 hours इफ यू आर डूइंग योर योगा प्रैक्टिस एंड इट इज गिविंग यू द बेनिफिट, इट इज नॉट नेसेसरी। इवन इफ यू आर स्पेयरिंग, अगर आपके लिए 1 hour भी ठीक है, मिनिमम आपके लिए 1 hour ठीक है योगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो यस मैम। आई एम टॉकिंग अबाउट, सी मैं एक किड्स योगा एक्सपर्ट हूँ, तो एज अ किड्स योगा टीचर अलग अलग मैं I always talk about for the kids that how long and how much duration for the practice of the kids, right? If you यस are मैम। talking about yourself, तो आपकी जो categorization है उसके लिए गाइडलाइंस बता सकते,
there are the guidelines which are mentioned. So I can tell you about those guidelines through the guidelines. Every time you must have seen that there is one hour of practice that is sufficient. यस मैम. Okay. ओके. और दूसरी बात की जो प्राणायाम होते हैं उसको तो 25 मिनट से 30 मिनट तो कर सकते हैं ना. प्राणायाम्स इट्स बेटर. आपकी अगर प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा है कि आप अपने आसन के साथ में अपने ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, उसको breath work देंगे. और प्राणायाम के लिए आप अपने आसन के बाद में, प्लीज अनम्यूट बुमा जी, अगर आप आसन के बाद में एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप प्राणायाम करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. 10 to 5 मिनट. 5 to 10 minutes is also fine. ओके ओके ओके. और एक और क्वेश्चन था कि आपने जो बताए योग के नियम बताए, फिर बहुत सारे लोग ये जो चक्रा आसन आते हैं तो चक्रासन. बहुत लोगों ने हाँ तो चक्रा के साथ जोड़ दिया है. जैसे कोई बोलता है कि मूलाधार चक्र के लिए ए है, सहस्त्रार चक्र के लिए ए है. सो आपकी क्या राय है उस पर कि चक्रा से कुछ लेना देना है या फिर जोड़ दिया है ऐसे ही. देखिए, जो आपके आसन रहते हैं, इट हैज द डिफरेंट इफेक्ट. उमा जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ, ठीक है. तो आपने चक्रासन का नाम लिया नीलेश जी, तो चक्रासन नहीं चक्रासन नहीं मैम, चक्रासन नहीं. जो अपने बॉडी के जो चक्र होते हैं ना, जैसे मूलाधार हो गया, स्वादिष्टान हो गया, सहस्त्रार हो गया, ऐसे चक्र नहीं बोलते कि बहुत सारे के लोग भी. तो आपके सिर पे यहाँ पे आग्नेय चक्र होता है, यहाँ पे ये चक्र होता है. तो ये एक्चुअली मैं आप मतलब आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही. हेलो. हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि योगा ठीक है आपने जो बोला हो, पर बहुत सारे लोग इसको चक्रा मेडिटेशन चक्रा के साथ जोड़ देते हैं. जैसे कि अपनी बॉडी में 7 या कोई 8 चक्रा है, ठीक है, तो उसके साथ जो जोड़ते हैं और बोलते हैं योगा की बात कर रहे हैं. चक्रा और योगा को कुछ लेना देना है कि नहीं है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ. हाँ, तो चक्रास एक अलग आपका मीनिंग है. मतलब योगा आप जब आप इनर सेल्फ में देखते हैं, जिसको ये कश्मीरा ने लिखा है कुंडलिनी योगा. Again, Kundalini is like another aspect which is also there. Like chakras is a different thing. Kundalini awakening is something else. तो जैसे ही आपके 7 chakras awaken हो जाते हैं, that is the Kundalini answer. That Kundalini awakening is also there. तो chakras आपका एक अलग concept है जो आप inner like wheel की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनर इनसाइड, देयर इज द इनर थिंग इनसाइड. आप जब भी कोई आसनास करते हैं, अगर आपके कोई डीप लाइक ग्राउंडिंग आसनास है, राइट, कुछ ऐसे ग्राउंडिंग आसनास होते हैं जैसे सिटिंग आसनास है, कोई ग्राउंडेड आसनास है, तो ग्राउंडेड आसनास विल बी वर्किंग ऑन योर मूलाधारा चक्र. मूलाधारा चक्र आपके अगर देखेंगे तो मूलाधारा चक्र का सिग्निफिकेशन क्या है. आप मूलाधारा चक्र देखेंगे कि वो ग्राउंडेडनेस पे वर्क करता है, कि आपके एक सेंस ऑफ सेफ, आप सेफ फील करें, आप हमेशा ग्राउंडेड रहें, राइट. आपके कुछ आसनास ऐसे होंगे जिसमें आपको लाइक इट इज स्ट्रेंथनिंग योर कोर, स्पाइनल कोर, कोर यस, एब्डोमिनल मसल, कोर स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल कोर स्ट्रेंथ. आप उसमें देखेंगे कि आपका जो है स्वादिष्टान चक्र, आपका अगर क्रिएटिविटी भी ठीक होना चाहिए तो आपका भी अच्छा होना चाहिए, राइट. यस. तो आपका स्वादिष्टान चक्र, जो स्वादिष्टान चक्र होता है वो कोर के लिए होता है. मणिपुर चक्र है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए होता है, राइट, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहे. उसके लिए जो आपका मणिपुर चक्र रहेगा, आपका जब आसना अच्छा रहेगा, धारणा ध्यान अच्छा रहेगा, आप अपने आप को अपने ब्रेथ वर्क पर अपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग रहेगा, तो उससे आपको मणिपुर चक्र में भी इफेक्ट आएगा. ओके. और दूसरी बात की मैम, जो अपना जो ध्यान होता है वो जैसे पतंजलि में लिखा होगा कि भाई अपनी श्वासों को देखिए आप, ठीक है,
और उस पर ध्यान करिए आती जाती श्वासों पे, ठीक है, वो तो एक्चुअली राइट है वहां पे। पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठिए और यहाँ पे देखिए कुछ दिया जल रहा है या होम दिखे, तो ये सब क्या है एक्चुअली? तो उसके बारे में आप बताएंगे, वो ध्यान है कि खाली ऐसे फेक है वो? कौन सा दिया जल रहा है? समझो कि मेडिटेशन में क्या होता है कि अपन जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उस पे अपने को कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है। पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठो तो अपना जो ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में आप उन दोनों को, आईब्रो, आईब्रो के बीच में कुछ है, यहाँ पे ऐसा आप एक धारणा करो कि यहाँ पे कुछ दिया है या समथिंग होम है, इसको देखो। तो जो चीज नहीं है उसको देखने को जो बोलते हैं, तो आपकी क्या राय है, वो सही है या गलत तरीका है? देखिए, आप जो बता रहे हैं वो एक दैट इज हेलो। अगेन। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। आर यू एबल टू हेयर? हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस यस। मैंने आपको एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था हम्म कुछ कारण से। मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो आपके दो आईब्रो के बीच में आप ऐसा गेस करो कि यहाँ पे कोई दिया जल रहा है, यानी कि जो दीप है, दीप, वो दीप है उस पर कंसंट्रेट करो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक होम जैसा है, तो होम पे कंसंट्रेट करो। तो जो चीज है ही नहीं उसको अगर वो लोग करते हैं बोलने को, तो आपकी क्या राय है, वो सही है गलत है? आप जो बता रहे हैं, यस, सभी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है त्राटक मेडिटेशन, त्राटक क्रिया। तो ये एक त्राटक क्रिया का फॉर्म है जो आप बता। त्राटक। सी त्राटक हम्म। क्रिया एक ऑब्जेक्ट से होता है, और जो आप कह रहे हैं वो एक सिंपली लोग जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो और यहाँ पे देखो ओम है। तो दैट इज हाँ समथिंग, दैट इज द डिफरेंट वे, जो एक लाइक दैट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब वो आप योगिक उसमें नहीं देख सकते कि ये एक योगा में, योगा की प्रैक्टिसेस में होता है। बट ये आप ये देखते हैं कि कई लोगों का जो एक इंस्ट्रक्शन होता है मेडिटेशन के लिए, राइट, मेडिटेशन करवाने के लिए, तो ये एक हाँ हाँ हाँ। मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो some people have a different way of giving the instructions in the meditation, ओके ओके। right? त्राटक तो मैं समझ गया कि कोई समझो अपनी जो ओपन आइज से कुछ एक ही ऑब्जेक्ट पे अपने को देखना है, तो हम्म इट्स कॉल्ड त्राटक, हो तो मैं समझ गया। पर हम्म बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने एक पढ़ा था कि ये बहुत सारे लोग गलत ऐसे दे रहे हैं इंफॉर्मेशन कि आप यहाँ पे ऐसे आंख बंद करके देखो, होम पे कॉन्सेंट्रेट करो, दीप पे कॉन्सेंट्रेट करो, इससे कुछ होता नहीं है। अपना अपनी जो श्वास है आती जाती श्वासों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इससे अपना थोड़ा क्लियर होता है, ऐसे अच्छा हम्म। रहता है वो। एक्चुअली वो लिखा है। आपने त्राटक क्रिया का क्या आपने त्राटक क्रिया कभी लिया है, लाइक आपने कभी त्राटक क्रिया? हाँ, तो कैसे होता है त्राटक क्रिया, नीलेश जी, आपने जो सीखा? त्राटक, हाँ त्राटक में जो करता हूँ उसमें क्या समझो, एक कैंडल होता है, ठीक है। हम्म हम्म तो कैंडल है तो वो जल रहा है कैंडल, ठीक है, तो जो हम्म जल रहा है ना, तो वहां पे अपने को खाली कॉन्सेंट्रेट करना है ओपन आइज से, हम्म जब हम्म तक खुली आंखें रह सके तब तक। हम्म फिर अगर आंखों में से पानी आता है, आंखें जलने लगती है, थोड़ी देर आंख बंद कर दो, फिर से हम्म खोलो, ऐसे 5-10 मिनट कर सकते हैं अपन। हम्म। तो उसको ही त्राटक बोलते हैं ना। तो देखिए, आपने जो एक ऐसा आपने सिंप्लीफाइड वे में ये बताया, बट आपने उसका इंटरनलाइजेशन नहीं बताया ना। उस त्राटक क्रिया का आपने ये नहीं बताया कि उस त्राटक क्रिया से इफेक्ट क्या होता है। वो तो आपकी आई गेजिंग प्रैक्टिस भी बोली जाती है, और आप उसमें दिया भी है। मानसी शर्मा हैज रिटन रियली वेल दैट यू हम्म। have a diya, you can have a candle at the point where you are able to concentrate, and उसमें त्राटक क्रिया में आपका जो लाइक जो पूरा कंप्लीट जितनी ड्यूरेशन तक आपका त्राटक क्रिया होगा, उसका बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो आपने सही त्राटक बहुत क्रिया। बेनिफिट, बहुत बेनिफिट मिलता है मैम इससे। अपने जो इस जो आई विचार होते हैं, जो दिमाग, वो शांत होता है एकदम, और एकदम अपना दैट इज क्लियर विजन होता है। हम्म दैट इज एन उससे आई बेनिफिट गेजिंग है। टेक्निक, दैट इज एन आई गेजिंग टेक्निक। हाँ, इट इम्प्रूव्स योर आई साइट एज वेल।
आई साइट इम्प्रूव Yes. होता है, आई गेजिंग टेक्निक होता है, एंड जितने भी आईज से आपके जो टीयर्स होते हैं दैट गिव्स ऑल द टॉक्सिन्स रिमूवल फ्रॉम योर आईज, Yes. राइट? Yes. Yes. तो दीज अगेन त्राटक क्रिया आपका कब आप करते हैं, आप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप त्राटक क्रिया करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कॉन्सेंट्रेशन। Yeah. अर्ली इन द मॉर्निंग में अच्छा रहता है वो, यस, हाँ, क्योंकि शाम को सोते समय करोगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी जल्दी। नहीं उससे पहले नहीं होता, इधर हम्म। बिफोर द सनसेट और इधर बिफोर द सनराइज, इट्स बेटर टू Yes. डू द त्राटक क्रिया, Yes. ओके, एंड इट हेल्प्स इन द कॉन्सेंट्रेशन। या बहुत हेल्प करता है। और हाँ, वो वाला हेल्प नहीं करता है, वो यहाँ पे होम देखो दिया देखो वो वाला कुछ हेल्प नहीं करता है, वो खाली ऐसे बातें करने की होती है खाली। आपको ऐसा क्यों लगता है नीलेश जी? मैंने बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने किया था उसको, प्रैक्टिस किया था, पर हम्म, इससे प्रैक्टिस करने से अच्छा मैंने जब मेरे ब्रेथ पे प्रैक्टिस किया तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। और वो मैंने प्रैक्टिस किया था 2-3 महीने, पर मुझे उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके, हम्म। तो अभी आपको कंसंट्रेट करने में वो होता है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होता है, तो जस्ट मैं पूछ रहा था कि आपका क्या कहना है उस पर ऐसे, क्योंकि आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा टीच करती हो, सिखाती अच्छा हो, इसलिए मैंने पूछा कि आपका क्या कहना है इस पर, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया जस्ट, और कुछ ओके, नहीं। नीलेश जी, यहाँ पे सभी प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर आप देखेंगे कि सभी को कहीं ना कहीं सभी यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, यू विल फाइंड मेनी अदर आंसर्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पे बहुत सारे आंसर्स आए हैं, ठीक है? यस यस। तो वी आर ऑल लाइक हियर टू इंटरैक्ट एज वेल। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ मुझे ही अच्छा नॉलेज है, मैं यहाँ नहीं नहीं मैम, हाँ, मैं ऐसा यहाँ, नहीं है। तो मैं यहाँ पे एज अ जो मुझे एक सिलेबस दिया है तो मुझे उस सिलेबस को कवर करना है, और जितने अगर आपके और एड ऑन है, मैं हमेशा सभी से एक्सपीरियंस आपका कहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड, राइट? यस मैम, यस मैम। तो दैट वेज, या थैंक यू। हाँ, मैम ये टाइम क्या रहेगा आपका क्लास का? टाइमिंग वैसे 7 to 8 है। अच्छा 8 है ना? हाँ ठीक है। यस, ऑल राइट, तो लेट मी हैव योर अटेंडेंस एवरीवन, ठीक है? अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ सबका। All right, taking your attendance. Just a minute. All right. So let's end the session with a closing prayer. Okay. Sit comfortably and join your palms together to the center. Gently close your eyes. Breathe in deeply and breathe out. Again, breathe in deeply and breathe out. Let's begin with your chanting, followed with a closing prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
Shantihi, Shantihi, Shantihi. Have a gentle smile on your face. Take your palms together and generate heat. Slowly and gently bring your palms to your eyes and all over to your face. Bring the palms in front of you. Open your eyes and look at your palms with a gentle smile on your face. Namaste everyone, and hopefully अच्छा है आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छा है कि हम इंटरैक्ट करते हैं और अच्छा है कि हम चैट बॉक्स में अपनी एक दूसरे की नॉलेज भी शेयर करते हैं. सो इट्स अ गुड वे सो दैट आई वांटेड इन दिस वे ओनली. तो अगर आपको कहीं पे भी लगे like for me as well that I want you want me to take class in a different way, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं. Okay. All right. Thank you, everyone. We'll be meeting tomorrow at the same time, 7. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you.